हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज विशी और आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ वन ऑफ द सुपर सिंपलेस्ट डॉट मंडला पेंटिंग। आप में से काफी लोगों को ये बात नहीं पता होगी कि डॉट आर्ट इज अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। यस, यू हर्ड राइट, दिस इज अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। और जब आप डॉट आर्ट प्रैक्टिस करते हैं तो आपका फोकस दिन ब दिन इंक्रीज होता है और आपको काफी पीस और कामनेस महसूस होती है। विश्वास नहीं होता तो आप खुद ट्राई कर लीजिए। ये देखने में आपको काफी कॉम्प्लेक्स लग रही होगी, बट बिलीव मी, दिस इज वेरी सिंपल। ये बस एक इल्यूजन है जो कि आप अगर आगे ट्यूटोरियल देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। और बिलीव मी, आपको ये पेंट करने में बहुत ज्यादा मजा आएगी। बाय द वे, do you know guys which illusion is this? This is known as spiral illusion। और ये जो मैंने बनाया है ये है spiral dot art। अगर आप देख सकते हैं, अगर and if you're having a closer look, really enjoy this। Have you ever had a dream that you do खत्म। One eternity later. आप देख सकते हैं कि this is having a dark green background with some tint of gold। Here I have used an MDF board base of 7.5 inches dia. Applying the base coat of dark green color. Darker base coats suit very well on the dot mandala paintings. Now mixing it with dark blue shade. In love with this tint of gold on the base. इस डॉट आर्ट को पेंट करने के लिए मैंने वेराइंग साइज के डॉट मंडला टूल्स यूज किए हैं। और अगर आपके पास वो टूल्स नहीं हैं तो यू डोंट हैव टू वरी। आप कोई भी ऐसे पेन्स, ब्रशेस के बैक साइड और यूज कर सकते हैं टू पुट डॉट्स ऑन एनीथिंग यू वांट। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। यहाँ पर मैंने 10 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाए हैं। आप आपके अवेलेबल टूल्स के साइज के अकॉर्डिंग और आपके कैनवस बोर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना सकते हैं। रेडियस आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा कि उनका साइज छोटे से बड़ा जाए। आप देख सकते हैं कि ये जो डॉट्स हैं वो छोटे से बड़े होते जा रहे हैं और ये काफ़ी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, बट हमको बस इसकी सिंपल सी स्ट्रैटेजी है जो समझनी है। मैंने इसको अराउंड 24 सेक्टर्स में डिवाइड किया है, तो आपको भी आपके कैनवस को 24 सेक्टर्स में डिवाइड करना है और उसके बाद हम हमारी पेंटिंग स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर मेरे से एक गलती हो गई थी कि सेक्टर्स डिवाइड करने के पहले ही मैंने डॉट रख दिया, जिसके कारण हमारा ये जो गोल्डन डॉट था वो रिमूव हो गया। तो हम पहले सेक्टर्स ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हमारा गोल्डन डॉट रखेंगे। We will mark points at 15 degree and then start joining those lines. सेंटर पर हम सबसे बड़े साइज का एक गोल्डन कलर का डॉट पुट करेंगे और उसके बाद उसी के अराउंड हम हमारा स्पाइरल पेंट करना शुरू कर देंगे। Don't forget to maintain the symmetry throughout the process of this painting, because symmetry is what makes these dot arts or these mandala paintings appear more beautiful, appear perfect. यहाँ पर मैंने इस वाले डॉट आर्ट टूल सेट का यूज किया है। I ordered these from Amazon. If you want, I can provide the link in the description box of the materials I have used to paint this one. So for the starters, we are using the smallest diameter dot tool and to put the dots here. Then we will start increasing the size of our dot tools in ascending order. Be precise and focused while putting the dots.
अपने टूल्स को किसी खराब कपड़े की हेल्प से क्लीन करना मत भूलेगा बिफोर डिपिंग योर टूल इनटू अनदर कलर, अदरवाइज आपके जो डॉट का साइज होगा वो डिफर कर जाएगा प्रीवियस साइज। ऑल्सो हमें टूल को बार बार कलर में डिप करना होगा अगर हमको सेम साइज चाहिए। अगर हम उसी एक बार डिप किए हुए टूल से बार बार डॉट्स रखेंगे तो साइज विल डिक्रीज डिसेंडिंगली। ये जो हमारा डॉट टूल है इसमें एक साइड दूसरे साइड से कंपैरेटिवली छोटा है, तो आफ्टर यूजिंग द स्मॉलर साइड वी विल नाउ टर्न टुवर्ड्स यूजिंग द बिगर वन। This is just so cute और आप देख सकते होंगे कि I have used all the colors of Bib Cure और आपको भी वो सारे कलर्स यूज करने होंगे, तभी आपकी पेंटिंग काफी ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव होगी। You will need a lot of patience to complete this one because you can see कि मैं हर बार एक डॉट रखने के लिए उसको डिप कर रही हूँ, तो हमको काफ़ी बार डिप करना पड़ेगा और काफ़ी पेशेंस के साथ इसको एक्यूरेटली कंप्लीट करना पड़ेगा। So one more benefit of dot art is that it teaches you patience. Here I am using the smallest size dot tool to make a pattern. आप वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं कैसा पैटर्न बनाने वाली हूँ। I have tried keeping this part of the video slow so that you can understand the pattern well. And we are almost done. I just absolutely love this piece of art और believe me जब आप अपना खुद का ये डॉट आर्ट बनाएंगे ना तो आपको भी ये बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। This is simply amazing, you know, love it. अरे हमारा लास्ट स्टेप तो रह ही गया। Now we will add a layer of varnish. I am using a wood varnish to cover it and provide it waterproofing and shiny texture. Hope you all enjoyed the video and found out some real value out of it. If you really did, do like, share and subscribe to my channel. Do give your feedback in the comment section down below. और मैं Instagram पर काफी active हूँ, तो you can follow me on Instagram and ask all your queries there.
Hope to see you in the next video. Till then, stay tuned. Bye-bye. Hope you like the video. Hope to meet you. तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बिल्कुल ही मेरी तरह, I mean cute